And there is one more chapter known as a local anesthetic. There is also remaining from medicinal chemistry point of view. The content of that chapter is also ready, but just I have not prepared the presentation today, so that will be taken in the some other day. Okay, so and we have already seen the diuretics chapter from pharmacology point of view. So whatever is important points from medicinal chemistry, their structural aspects, their structural activity relationship, that is important, and their structure are important. So that will be discussed. But at the same time, I would like to repeat the classification also, because see sometime क्या होता है कि आपको क्लासिफिकेशन याद नहीं रहता, और क्लासिफिकेशन दो बार अगर हो गया तो आपको याद रहेगा. सो क्लासिफिकेशन भी थोड़ा सा रिवाइज करने का ट्राई करेंगे अपन. ओके, सो लेट्स so you have classification in front of you. So diuretics are classified in different way. Okay, so this is actually basically pharmacological classification. So it may be classified according to the site of action. Okay, according to the site of action, there are 5 sites which can be which where drug can act. Okay, so first one is your renal tubule, proximal renal tubule, or PCT. What we call it is a PCT, proximal convoluted tubule. So over this PCT, carbonic anhydrase drug will act. Okay, like acetazolamide and other drugs. Okay, other its brothers, acetazolamide and its brothers. Then osmotic diuretics will also act in this proximal convoluted tubule. So example, for example, urea is there, mannitol is there, a lot of drugs are other drugs are there. Okay, drug can act on a PCT, then drug can act on a loop of Henle. We call them as the loop diuretics. Okay, then drug also can act on a DCD, and few drugs used to act on a collecting duct. Okay, then again on PCT your carbonic anhydrase will act. Then osmotic diuretics like mannitol, urea, then isosorbide, all that they will act on a this part. Then vasodilators or central alpha central stimulus, CNS stimulant, like your caffeine, theophylline, they also will act on a proximal convoluted tube. Then second class will be those acting on a your descending loop of Henle, like furosemide, then bumetanide and ethacrynic acid. Furosemide, bumetanide and ethacrynic acid. So these are nothing but the loop diuretics. They are known as a high ceiling diuretics, or they are known as a loop diuretics. Now third one is your ascending loop of Henle, where thiazide diuretics and mercury compounds, they will act over here. Okay, then distal convoluted tubule, DCT. So steroidal drugs like spironolactone, aldosterone antagonist, so it will act on this stage. Then triametrine will also act on this stage. So you have to remember the classification, that's why I am repeating this. So those drugs which will act on a PCT, like carbonic anhydrase, osmotic diuretics, and your central diuretics. Okay, central stimulant like caffeine, theophylline, aminophylline, etc. So they will act on a PCT. Then second class will be those drugs which will act on a loop of Henle, that is known as ascending loop of Henle, and that is nothing but the loop diuretics, or they are known as a high ceiling diuretics. High ceiling diuretics, furosemide, then bumetanide, then ethacrynic acid. Okay, then th third side is nothing but your ascending loop of Henle, that is known as a thick leak. Okay, sorry, ascending loop of Henle, that is known as a thick loop or thick limb. Okay, so here thiazide diuretics and mercurial compounds, they will act. Then distal convoluted tubule, here steroidal antagonist like aldosterone antagonist, like your spironolactone, aldosterone antagonist like spironolactone, then ipralenone, they will act on this stage. Then steroidal drugs. Okay, then triametrine, potassium sparing diuretics, they also act on this stage. Potassium sparing diuretics, they will act on this side. Again they are also classified according to their efficiency, means how efficient they are, how efficient they are to cause diuresis. So high efficacious diuretics like furosemide and ethacrynic acid, so they are loop diuretics. Then moderately efficacious diuretic, कि ज्यादा नहीं करेंगे diuresis, कौन है वो? So these are nothing but the thiazide diuretics, then chlorothiazide, hydrochlorothiazide, then polythiazide, chlorothalidone, then metolazone, indapamide.
So last two, this chlorothalidone, metolazone, and indapamide, last three, they are not actually a thiazide diuretics, but they are thiazide like diuretics because they are not having a structural similarity with the thiazide diuretics, but they act as a like a thiazide diuretics. That's why they are not purely a thiazide diuretics, but they are thiazide like diuretics. Okay, ये याद रखो आप. Next class is your low efficacy diuretics, like osmotic diuretics. They will not produce too much loss of your water and electrolyte. Okay, so high selling diuretic जो होते हैं, जो loop diuretic होते हैं, वो क्या करेंगे? They will cause a drastic loss, high amount of loss of water and electrolyte will be there. ये जो loop diuretic होते हैं, वो क्या करेंगे कि बहुत सारा वाटर लॉस करेंगे, बहुत सारा सॉल्ट लॉस करेंगे. कौन? हाई इफिशियंसी, हाई इफिकियस, हाई इफिशियंसी डायरेटिक्स और लूप डायरेटिक्स और हाई सेलिंग डायरेटिक्स. और मीडियम लॉस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट विल बी देयर इन केस ऑफ thiazide diuretics and chlorothalidone, metolazone, then indapamide. And very low loss of water and electrolytes will be there in case of osmotic diuretics, then potassium sparing diuretics and carbonic anhydrase inhibitor. Okay, so this is just a quick revision of your classification. We have already seen it, don't worry. Now next point. So what are the osmotic diuretics? These are nothing but the glycerin, mannitol, urea, isosorbide. Okay, so these are known as the osmotic diuretics. Why? Because they will cause loss of water by their osmotic effect, by their osmotic activity. Okay, how they will act? They will increase the osmotic pressure in the tubules. Okay, जो नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन का ट्यूबुल्स होता है, उसमें क्या करेंगे? ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज करेंगे. तो क्या होगा? ऑस्मोटिक प्रेशर ट्यूबुल का ज्यादा होगा और आपके ब्लड वेसल बाकी बाकी जो है उसमें कम होगा. तो क्या होगा? वाटर कहाँ से कहाँ जाएगा? वाटर जो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस है वहां से ट्यूबुल्स में जाएगा. ठीक है, सो दे विल टेक वाटर विद देम. दे दे विल टेक वाटर विद देम, क्योंकि उनका ऑस्मोटिक प्रॉपर्टी होता है. दे विल इंक्रीज द ऑस्मोटिक प्रेशर इन द ट्यूबुल्स एंड वाटर दे विल टेक वाटर विद देम. नाउ दिस, इसकी वजह से यार मेरे को इतना बोर होता है ना, मैं टाइम कई को देता हूँ टाइम पे कि यार मैंने बोला है, टाइम दिया है आपको, इन्फॉर्म भी करता हूँ ग्रुप में, फिर भी यार ये ऐसे करते हैं. बीच में क्या होता है, सब प्रॉब्लम हो जाता है. लिंक हो जाएगी, शेयर करना, फिर से लिंक शेयर करो, स्क्रीन शेयर करो, ये सब. Okay, so these are the osmotic diuretics. Okay, so these osmotic diuretics, example glycerin, then mannitol, then urea and isosorbide. Okay, so out of these mostly mannitol is used as a osmotic diuretic. So these three are rarely used: glycerin, urea and isosorbide. They are not much used. Okay, so glycerin का स्ट्रक्चर आपको सिंपल है, याद रख सकते हैं आप इजीली. ये 3 कार्बन एटम है इसमें, 1 2 3, और तीनों कार्बन एटम को क्या है? OH ग्रुप है, दैट इज ग्लिसरीन. ओके, नाउ मैनिटोल इज अ हेक्सोज शुगर. 6 कार्बन एटम होंगे, देखो आप 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन एटम है, उसके ऊपर H एंड OH ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल एंड हाइड्रोजन ग्रुप, दैट इज अ मैनिटोल. ओके, यूरिया आपको मालूम है, NH2 C double bond NH2 यूरिया, दिस इज आइसोसोर्बाइड. Okay, so out of these 4 osmotic diuretics, mannitol is mostly used. Okay, so it is used. Remember, these osmotic diuretics, they are not absorbed from intestine, so that's why they are not given orally. ये जो osmotic diuretic होते हैं वो orally देते नहीं है, क्योंकि उनका टैबलेट नहीं मिलेगा. If you go to a medical shop and if you ask them, please give me a mannitol tablet, mannitol का टैबलेट अवेलेबल नहीं रहता है. ठीक है, so that's why they are not absorbed from intestine, and that's why we have to give them using intravenous. Okay, so that's why intravenous mannitol solution is available. Okay, that is used as a osmotic diuretic. So mannitol solution, यूरिया का solution भी देते हैं कभी कभी, यूरिया का dangerous हो सकता है इसलिए यूरिया नहीं यूज करते. So mostly this mannitol is used in the osmotic diuretics as a osmotic diuretics. Okay, but now this mannitol, see this mannitol, are you able to hear me properly or not? So this mannitol, it is given by intravenous route only. Okay, and now this mannitol is used as an osmotic diuretic in case of different conditions. Also, it is a drug of choice in case of your intracranial hemorrhage.
अगर आपकी खोपड़ी खुल गई या खोपड़ी में कोई डैमेज हो गया, ठीक है, इंट्राक्रैनियल ब्लीडिंग जिसको बोलते हैं, इंट्राक्रैनियल ब्लीडिंग या फिर इंट्राक्रैनियल हेमोरेज, और इन यूज टू रिड्यूस द प्रेशर ऑन ब्रेन. ओके, so mannitol is used as a osmotic diuretic to reduce the pressure on brain, to reduce the intracranial fluid. Okay, so then again it is also used to reduce the CSF level. Then it is a drug of choice in case of head injury. हेड इंजरी अगर किसी को है तो उसको अगर हेड इंजरी की वजह से इंटरनल क्रैनियम में अगर कोई प्रेशर बढ़ रहा है, वहां पे हाइड्रोसेफेलस हो गया, तो इन दैट केस यू हैव टू यूज मैनिटोल. ओके, so and remember these drugs are only given by intravenous route. They are not absorbed in from the intestine. Okay, and because of their osmotic property, वो क्या करते हैं कि ट्यूबुल्स में आपके ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ा देते हैं. अगर वहां पे ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है और एक्स्ट्रा सेलुलर में कम है, तो ऑब्वियसली वाटर कहाँ मूव होगा, आपके इनके साथ में मूव होगा. और दे आर एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी अनचेंज्ड, मीन्स दे आर नॉट मेटाबोलाइज्ड इन द बॉडी. तो आप एज इट इज उनको यूरिन में जाएगी वो, ठीक है. सो दे आर फिल्ट्रेटेड एज इट इज, they are actively filtrated and they take water along with them, so that's why they causes diuresis, and they are osmotic diuretics. Okay, because of osmosis they causes diuresis. Now next one is your thiazide diuretics. Okay, thiazide diuretics. So what is the basic structure for thiazide diuretics? So basic structure for thiazide diuretics, they are known as hydrothiazides. Okay, they are known as hydrothiazides or benzthiazides. Okay, they are known as hydrothiazide or benzthiazides, remember. So it is a structure. Thiazide means azide, thia means sulfur, and this NH2 ammonia means azide. So thiazide diuretics. Okay, thiazide diuretics. So see the numbering, sulfur is given 1, this nitrogen 2, and this nitrogen 3. So sometimes they have quinazoline like structure. Okay, they have quinazoline like structure. Okay, so this is the basic structure of thiazide. Okay, 1 2 3 4 5 6 7. Okay, now you have substitution over here, nitrogen 1. Okay, then this carbon number 3 and this carbon number 6. Okay, so you can modify structure of thiazide diuretics in this area. So obviously this carbon number 6 is a here you should have some electron withdrawing group like chlorine and all that. Electron withdrawing group should be here. So we will see these things in the upcoming slide. That is the structural activity of thiazide diuretics. So try to remember the kind of structure. Now chlorothiazide. So you have thiazide nucleus over here. Just replace this R6 by chlorine. So you will get chlorothiazide. So here chlorine is only there. So remaining things are same. Here is hydrogen, here is hydrogen. Okay, so chlorothiazide. Then hydrochlorothiazide. Okay, hydrochlorothiazide. इस हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड जो है स्ट्रक्चर यहाँ पे कट गया है. हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड में क्या होता है, एक डबल बॉन्ड नहीं होता है. यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है यहाँ पे वो उसमें वो नहीं होता हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड में, बस. बाकी हाइड्रोफ्लोमिथाजाइड. अभी देखा मैंने बोला था ना डबल बॉन्ड नहीं होता है यहाँ पे. ये देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं है. ऐसा ही स्ट्रक्चर है हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड. नाउ hydroflumetazide. So as the name indicates, flumethazide, flu means fluorine. So there is introduction of fluorine over carbon number 6. So methyl fluoride group is there over carbon number मिथाइल फ्लोराइड. सो थायजाइड का न्यूक्लियस याद रखना है. उसके बाद में क्लोरोथाइजाइड में क्या है, सिर्फ कार्बन नंबर 6 पे क्लोरीन अटैच करो, क्लोरोथाइजाइड हो गया. हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड क्या कैसे होगा, यहाँ पे जो कार्बन नंबर जो है 3 और 4 में जो डबल बॉन्ड है उसको रिमूव कर दो, उसको हो गया हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड. अभी हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड का हाइड्रोफ्लोरोथाइजाइड कैसे, हाइड्रोफ्लूमिथाजाइड कैसे करेंगे कि सिर्फ आपका कार्बन नंबर 6 जो है उसको रिप्लेस करो मिथाइल फ्लोराइड. जो हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड का स्ट्रक्चर है उसमें सिर्फ आपको ये ऐड करना है, हो गया आपका हाइड्रोफ्लूमिथाजाइड. ठीक है. नाउ बेन हाइड्रोफ्लूमिथाजाइड. बेन हाइड्रोफ्लूमिथाजाइड में क्या होगा, एज द नेम इंडिकेट बेन मतलब बेन फॉर बेंजीन. ओके, बेंजील ग्रुप इज देयर, एडिशनल बेंजील ग्रुप इज देयर. सी you can see here additional benzyl group is there.
So that is nothing but the bane hydrofluomethazide. So just how to remember the structure, I'm just telling you the tricks. Okay, so just try to फोकस व्हाट इज ऑड, ट्राई टू फोकस व्हाट इज ऑड, कि इसमें ऑड क्या है। एक तो ट्राई टू रिमेम्बर द बेसिक स्केलेटन, ये बेसिक स्केलेटन आपको याद रखना है, नंबरिंग याद रखना है, ठीक है। एक बार थायजाइड का नंबरिंग बस बेसिक स्ट्रक्चर याद रखा आपने तो आपको क्लोरोथायजाइड मतलब क्या, सिर्फ 6 पोजीशन जो है कार्बन 6, सो जस्ट अटैच द क्लोरीन, देन हाइड्रोक्लोरोथायजाइड जस्ट रिमूव this double bond, so hydrochlorothiazide, then hydrofluomethazide, then just introduce over here methyl chloride, then bane hydrofluomethazide, as the name indicates, bane hydro means it is a hydrochlorothiazide derivative, then bane hydroflu means this fluorine is there, then bane means benzoyl group is there, okay, so benzoyl here group is there, so that is a bane bendrofluomethazide, okay. Now SAR of your thiazide diuretics, so these thiazide diuretics, they will act on a ascending loop of Henle and some part of your DCT. So they are nothing but the low efficiency diuretics. They are low efficiency diuretics, thiazide diuretics. Okay. So structural activity relationship of thiazide. So these compounds are very acidic. Why these compounds are very acidic? Because of this हाइड्रोजन ओवर हियर, ये जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन नंबर 1, उसके ऊपर जो हाइड्रोजन है, बिकॉज ऑफ दिस प्रोटॉन, and because of this proton they are a highly acidic molecule, and because of this proton as well as because of this sulfhydryl group, they are also thiazide, okay, because they are also acidic. They are acidic because of two reasons. First one is this hydrogen and second one is these groups, ये बड़े बड़े जो ग्रुप्स है सल्फॉक्सी ग्रुप्स उसके, तो उसकी वजह से उनका एसिडिटी है, ओके, तो दे आर वीकली एसिडिक. सो हाइड्रोजन एटम ऑफ नंबर 2 नाइट्रोजन is most acidic due to electron withdrawing effect of the neighboring sulfur group. ये देखो इसके जो सेकंड नंबर का नाइट्रोजन है उसके साथ में ही सल्फोन ग्रुप है, ठीक है, सल्फर प्लस 2 कीटोन, ठीक है, 2 कीटोन सल्फोन ग्रुप से उसके ऊपर, एंड बिकॉज ऑफ दैट इट इज द मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन ओवर हियर. देन सल्फामिडो ग्रुप एट C7, SO2NH ग्रुप जो है, SO2NH सल्फामिडो ग्रुप जो 7 नंबर पे is an additional point. It will also a additional point for acidity in the molecule, but it has a less acid. That sulfamido group is less acidic than the acidity because of the proton present in the nitrogen 2. Okay, a free sulfoamyl group at position 7 is essential for the activity. कि जो सल्फोमाइल ग्रुप है at the position 7, कौन सा सल्फोमाइल ग्रुप है पोजीशन 7 पे, यहाँ पे जो रहेगा ग्रुप, ठीक है, ये जो ग्रुप सल्फोमाइल ग्रुप है, सो इट शुड बी फ्री, इट इज एसेंशियल फॉर एक्टिविटी, इट शुड बी फ्री. यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, ये देखो इस स्ट्रक्चर में यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, बिकॉज ऑफ दिस हाइड्रोजन दिस नाइट्रोजन इज वेरी, it is the most acidic in the structure, okay, and the acidity of this chlorothiazide is also because of some part of this, okay, इसकी वजह से भी एसिडिक होता है. और sulfamido group at C7 position provides additional point of acidity in the molecule, but it is less acidic than the nitrogen proton. A free sulfamyl group at position 7 is important for activity. Then these acidic proton makes possible the formation of water soluble sodium salts, and that can be given by IV. Okay, so because of this acidity property of thiazide diuretics, so it is possible to make their salts like hydrochlorothiazide, sodium salt of hydrochlorothiazide, or potassium salt of hydrochlorothiazide. So it can be made in the salt form, and that is used in the IV for intravenous dose. Then electron withdrawing group is essential at position 6. जो chlorine group है, जो methyl fluoride groups है, so those are very essential for the activity. So there should be electron withdrawing group. There should not be electron donating group or electron rich group. So diuretic activity is enhanced by position substitution at position number 3. जो बोला था मैंने, ठीक है. So diuretic activity can be increased by substitution at position number 3.
Then replacement of chlorine by methyl fluoride, okay, does not change the potency of compound but alters the duration of action, कि long duration करेगा. Replacement of chlorine by electron donating groups like methyl group, so that will reduce your the activity, that will reduce the activity of thiazide derivatives because their electron withdrawing group should be there. So if you try to replace electron withdrawing group by electron donating group, so that will decrease the activity. Now next point, saturation of thiazine ring, जो रिंग है बेस, जो मिडल रिंग है thiazine ring. Thia means sulfur, diazine means di means two, azine means nitrogen. So thiadiazine, जो ये जो रिंग है thiadiazine रिंग, कौन सा मैं दिखाऊं, ये जो रिंग है इट इज नोन एज thiadiazine रिंग. सो thiadiazine, thia means sulfur, diazine means दो नाइट्रोजन, ठीक है, thiadiazine. So it is basically it is known as Baines thiadiazine ring. Okay, so the basic structure of it is known as Baines thiadiazine ring. Baines thiadiazine, ओके, बेंज thiadiazine. ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है कभी कभी, आपको याद रखना है बेंज thiadiazine, ठीक है. सैचुरेशन ऑफ thiadiazine रिंग टू गिव 3,4 डाइहाइड्रो डेरिवेटिव एंड रिप्लेसमेंट or removal of sulfamido group at position 7 give compound with little or no diuretic activity. Means if you try to replace if you try to saturate the ring, if you try to saturate the ring, then you will get a inactive compound. That's it. Now next one is your thiazide like diuretics. ये thiazide like diuretics मतलब thiazide diuretics नहीं है ये, लेकिन thiazide like मतलब उनके जैसे एक्शन होता है, उनका मैकेनिज्म या फिर उनका फार्माकोलॉजिकल एक्शंस. सो दे विल हैव सिमिलर फार्माकोलॉजिकल एक्शंस एंड सिमिलर फार्माकोलॉजिकल यूजेस as like thiazide diuretics. That's why they are known as thiazide like diuretics. But they don't have any structure. What are they? Chlorthalidone, then metolazone, then indapamide. Okay, these are the three. But they have their own structural specificity. They are known as sulfamoyl benzoic acid derivative. Sorry, they are known as a quinazolinone. Okay, so they are known as quinazolinone derivative, quinazolinone. Okay, so it is a quinazoline ring. You can see here metolazone. In the metolazone, this ring is known as quinazoline ring. So they are known as a quinazolone derivative because of the ketone. Quinazoline ring है और उसको ketone है, so that's why they are known as quinazolinone. Okay, so quinazolinone derivative, they are a quinazolinone derivative. So in that case chlorothalidone is there, then metolazone is there, then indapamide is there. Okay, so these drugs, they are not having structural similarity or structural resemblance, और उनका स्ट्रक्चर हाइड्रोथाइजाइड और क्लोरोथाइजाइड के जैसा नहीं है, लेकिन उनका एक्शंस है, फार्माकोलॉजिकल एक्शंस उनका सिमिलर है. दैट्स व्हाई दे आर थाइजाइड लाइक डायरेटिक्स. ओके, सो इन दैट केस क्लोरथैलिडोन इज देयर, metolazone is there, and indapamide is there. Okay, so in this case, so this metolazone is having longest duration of action. Okay, उसके बाद क्लोरथैलिडोन, उसके बाद इंडापामाइड. सबसे लॉन्गेस्ट एक्टिंग कौन है? मेटोलेजोन. इसका तकरीबन ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है 48 to 72 आवर्स. और जो आपका जो क्लोरथैलिडोन है उसका ड्यूरेशन कम होता है. ठीक है, सो इंडापामाइड जो है, इंडापामाइड एक्चुअली इट इज अ बेंज हाइड्राजाइड डेरिवेटिव. इट इज अ बेंज हाइड्राजाइड डेरिवेटिव. क्यों बोलते हैं उसका बेंज हाइड्राजाइड? ये देखो बेंजीन रिंग है और ये CONH जो है दैट इज नोन एज हाइड्राजिन. ओके, सो बेंज हाइड्राजिन डेरिवेटिव. इंडापामाइड इज अ बेंज हाइड्राजिन डेरिवेटिव. आपको अगर लिखना है कुछ तो लिख सकते हो, इंडापामाइड इज अ बेंज हाइड्राजिन डेरिवेटिव. इट इज अ बेंज क्विनोलोन डेरिवेटिव. बेंज क्विनोलोन. ओके, बेंज क्विनोलोन. सॉरी, बेंज क्या बोलते हैं उसको? क्विनाजोलिनोन. ओके, ये क्विनाजोलिन रिंग है. क्विनाजोलिन रिंग जो होता है, ये क्विनाजोलिन रिंग है दो, और उसको कीटोन है क्विनाजोलिनोन. ये क्विनाजोलिनोन डेरिवेटिव कौन? मेटोलाजोन. और ये क्या है? बेंज हाइड्राजिन. ठीक है, बेंज हाइड्राजिन डेरिवेटिव.
and they have similar action with the thiazide. Now thiazide diuretics आपको use वगैरह जो है, what is use of thiazide diuretics we have seen. So they are used in the mild to moderate hypertension. Okay, thiazide diuretics to decrease जो जितना भी मतलब to decrease the mild and moderate edema, mild and moderate hypertension. Okay, so we have seen these points in the pharmacology, but still I want to repeat. Okay, then next class is a potassium sparing diuretics. Okay, so I will take it later. पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स मीन्स क्या कि ये पोटेशियम का लॉस नहीं होने देंगे. सो जितने भी डायरेटिक्स है, जैसे आपका थायराइड डायरेटिक्स है, आपका ऑस्मोटिक डायरेटिक्स है, या फिर आपका कार्बोनिक अनहाइड्रेस इनहिबिटर डायरेटिक्स है, सो दे विल cause loss of sodium. Along with sodium, water will also go, and I have told you the sodium is a big brother, potassium is a younger brother or a small brother. So if sodium goes, along with that water goes, and along with that potassium also goes, but potassium loss is not a good business for body. तो पोटेशियम का लॉस होगा तो अच्छा नहीं बॉडी के लिए. सो यू हैव टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ पोटेशियम. ठीक है, क्योंकि पोटेशियम का इंटेक कम होता है, सोडियम का इंटेक बहुत ज्यादा होता है, आप सॉल्ट खाते ही रहते. पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक, सो दे विल नॉट cause excretion of potassium. So potassium sparing diuretic. So in that you have amiloride, you have triametrine, you have spironolactone and all that. Okay, so these potassium sparing diuretic, they will act on the later part of your later part of your DCT, distal convoluted tubule के बाद का पार्ट जो होता है नेफ्रॉन का, उसके ऊपर एक्ट करेंगे, या जो कलेक्टिंग डक्ट है उसके इनिशियल पार्ट पे एक्ट करेंगे. दीज पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक. और मैकेनिज्म एक्शन क्या होता है क्या नहीं है, वो जो क्लोराइड सोडियम क्लोराइड एक्सचेंज पंप जो होता है उसके ऊपर ऐड करेंगे. ये अपन ने देखा था. ओके, सो यू जस्ट हैव टू रिमेंबर द स्ट्रक्चर अमीलोराइड एंड ट्राइमेट्रिन. स्ट्रक्चर नहीं याद रखा तो भी चलेगा, लेकिन इतना याद रखो कि पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक कौन से, अमीलोराइड, ट्राइमेट्रिन, स्पाइरोनोलैक्टोन एक्सेट्रा. So these are the potassium sparing. So most of them are the piperazine derivative. ये देखो piperazine है यहाँ पे, piperazine derivative ये piperazine है, ये डाइपिप्रेजिन है. इसका स्ट्रक्चर भी याद रखना सिंपल है. ट्राया मीन्स कितना, 3, ट्राई मीन्स 3, सो ट्रायामेट्रिन. ठीक है, ट्रायामेट्रिन में 30 यहाँ पे 3 अमोनिया है, ये भी याद रख सकते हो. 3 अमोनियम ग्रुप है, या फिर आप ट्राइमेट्रिन में 3 रिंग भी याद रख सकते हो. ऐसा ट्रिक वगैरह बना के आप कर सकते हो. ठीक है, सो पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स. कार्बोनिक अनहाइड्रेस इनहिबिटर्स. सो कार्बोनिक अनहाइड्रेस का रोल क्या है? सो इट इज द एंजाइम व्हिच विल कन्वर्ट your water and carbon dioxide into carbonic acid. Okay, and that carbonic acid will split down into hydrogen to give a hydrogen and carbonium ion and hydrogen. Okay, that carbonium ion and that hydrogen is replaced with that sodium. Okay, so carbonic anhydrase is responsible for the sodium reabsorption. So if you inhibit that enzyme, so there will be no hydrogen will be available, there will be no carbonium ion available, so there will be loss of there will be loss of sodium and there will be loss of carbonate ion. Okay, सोडियम लॉस क्यों होगा? क्योंकि कार्बोनिक एसिड अगर वाटर से और कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोनिक एसिड नहीं बनेगा तो कार्बोनिक एसिड का डिसोसिएशन नहीं होगा. कार्बोनिक एसिड का डिसोसिएशन किसमें होता है? कार्बोनियम आयन में और बाइकार्बोनेट आयन में और हाइड्रोजन में. और वो हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोजन एक्सचेंज होता है किसके साथ? सोडियम के साथ. अगर हाइड्रोजन नहीं होगा तो सोडियम एक्सचेंज नहीं होगा डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूबुल में. ठीक है, और पीसीटी में तो क्या होगा? उसका लॉस होगा. ठीक है, सो सोडियम लॉस होगा तो वाटर भी लॉस होगा. सो दैट्स हाउ दे कॉजेस डायूरेसिस. सो इन दिस कैटेगरी यू हैव 3 ड्रग्स, एसिटाजोलामाइड, देन मिथाजोलामाइड एंड देन dichlorphenamide. Okay, so acetazolamide, aceta means acetyl group. You can see here acetyl group is there.
एजोलामाइड, एसिटाजोलामाइड. सो अगेन सल्फामेडो ग्रुप होगा यहाँ पे. ये एक्चुअली दीज आर द 5 मेंबर्ड स्ट्रक्चर ओनली. ओके, 5 मेंबर्ड रिंग के स्ट्रक्चर होंगे उसमें. सो रिमेंबर, याद रखो, एसिटाजोलामाइड, मिथाजोलामाइड एंड डाइक्लोरफेनामाइड. अभी डाइक्लोरफेनामाइड का स्ट्रक्चर तो बहुत इजी है. डाइक्लोरफेनामाइड आप नाम में इस नाम से ही याद सकते हो. डाइक्लोरो मीन्स 2 क्लोरीन होगा. ओके, 2 क्लोरीन, डाइक्लोरोफेनामाइड, फेना मीन्स फिनाइल रिंग एंड amide. Okay, so this portion is amide, this portion is phenyl ring, and this is dichloro. So dichlorophena-amide, dichlorophena-amide. इतना स्ट्रक्चर सिंपल है याद रखने के लिए. ओके, सो एसिटाजोलामाइड, मिथाजोलामाइड एंड डाइक्लोरोफेनामाइड. ओके, अभी उसका स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप देख लेते हैं. सो उसमें कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है. ये पूरे लेक्चर में आपको आया तो 1-2 क्वेश्चन आ सकता है, तो आ भी नहीं सकता. ठीक है. सो कार्बनिक अनहाइड्रेट स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप. ठीक है. सो किसमें 1-2 पॉइंट है, ज्यादा नहीं है. सो ऑल इनहिबिट्स द कार्बनिक अनहाइड्रेट एक्टिविटी. ओके, now these three, acetazolamide, methazolamide and dichlorphenamide, all inhibit the carbonic anhydrous activity. Now carbonic anhydrous कहाँ पे प्रेजेंट है, मैंने आपको बोला था. इट इज आल्सो प्रेजेंट इन द GIT, it is also present in the your nephron, it is also present in your brain. Okay, it is also present in your eyes. Okay, so inhibition of carbonic anhydrous in the kidney will cause diuresis. Inhibition of carbonic anhydrous in the brain cause depression or decrease in the activity of brain. There is an anti-epileptic activity. So carbonic anhydrous acetazolamide is useful as a diuretic as well as anti-epileptic. It is used as anti-epileptic also. It is also used as a diuretic. It is also used to reduce the intraocular tension in the glaucoma. Okay, so it will, all these three inhibit the carbonic anhydrous enzyme. Importantly, they have no antibacterial activity. इनको देखो, सल्फामिडो ग्रुप है यहाँ पे, SO2NH. ये जो ग्रुप है सल्फामिडो ग्रुप है, इसको बोलते हैं सल्फामिडो ग्रुप. ये सल्फामिडो ग्रुप आपका किस में होता है, और सल्फोनामाइड में इसमें होता है. सल्फोनामाइड्स जो एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स होते हैं, सो दोज एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स नोन एज सल्फोनामाइड्स, दे विल हैव आल्सो सल्फामिडो ग्रुप. सो इन दैट केस दैट इज एसेंशियल फॉर एक्टिविटी, antibacterial activity. But this group is also present in the these carbonic anhydrous inhibitor, but here they will not have any antibacterial activity. Now substitution on sulfamyl group gives inactive compound, so you should not disturb this sulfamide group. Okay, सल्फामाइल ग्रुप जो है उसको डिस्टर्ब नहीं करना है. उसको डिस्टर्ब करेंगे तो डायरेक्टिक एक्टिविटी लॉस होगा और कार्बनिक अनहाइड्रेस इनिबिशन एक्टिविटी लॉस होगा. सो दीज आर द इनिबिटर्स ऑफ कार्बनिक अनहाइड्रेस, रिमेंबर. ओके, so there are only few points, there are nothing to discuss much over here. Loop diuretics. Loop diuretics means what? They will act on a loop of Henle and they are known as a high sealing diuretics or high efficacy diuretics, or they are also known as a loop diuretics, or they are also known as a high sealing diuretics, or they are also known as a high efficiency diuretics. Okay, in this case you have different kind of drugs. First one is a furosemide, then torsemide is there, then bumetanide is there, then ethacrynic acid is there. So furosemide, so it is having what is the basic structure of here you are able to see the structure. What is the ring? They are known as a sulfamoyl benzoic acid derivative. Okay, they are known as sulfamoyl benzoic acid derivative. ठीक है, अभी देखो, you can see here this one is known as sulfamoyl group. Okay, sulfamoyl group, and if you see here, this is the benzene and this is the acid group. So this is the benzoic acid. So sulfamoyl benzoic acid derivative, known as a sulfamoyl benzoic acid derivative. So loop diuretics, they are nothing but the sulfamoyl benzoic acid derivative. Okay, they are the sulfamoyl benzoic acid derivative. In this case you have furosemide, and now in the structure of furosemide you have furan group over here. So furosemide, you can remember the structure easily. सल्फामाइड बेंजोइक एसिड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का, उसको फ्यूरन ऐड करने का अमाइड से, तो फ्यूरोसेमाइड, सल्फामाइल बेंजोइक एसिड. ये देखो यहाँ से ये बेंजोइक एसिड होगा, ये सल्फामाइल होगा. ठीक है, सल्फामाइल बेंजोइक एसिड, इसको अमाइड से
उसको जोड़ना है, ठीक है, अमाइड से जोड़ना है किसको, फ्यूरान ग्रुप को, हो गया फ्यूरोसेमाइड। देन उसमें आता है दूसरा आता है टॉर्सेमाइड। ओके, जो टॉर्सेमाइड है इट इज हैविंग लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। जो टॉर्सेमाइड है उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन लॉन्ग है एज कम्पेयर टू फ्यूरोसेमाइड, और साइड इफेक्ट्स कम है लेकिन उसका। नेक्स्ट वन इज अ ब्यूमेटेनाइड। ब्यूमेटेनाइड 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 इज आल्सो अ डेरिवेटिव ऑफ दिस फ्यूरोसेमाइड। ओके, सेम, बाकी ज्यादा कुछ है नहीं उसमें। नाउ नेक्स्ट वन इज इथाक्रेनिक एसिड। सो इथाक्रेनिक acid, okay, so these loop diuretics, ethacrenic acid, so it is a acid derivative, you can see here it is a aryl acetic acid derivative. Then now these loop diuretics, they will cause a drastic loss of water, then sodium, and that's why they will cause hypokalemia and all that. We have seen these kind of things. Now they are used to reduce the edema, they are used to decrease the sudden hypertension। एंटी हाइपरटेंसिव, एज एंटी हाइपरटेंसिव इसको कम यूज करते हैं, एंटी हाइपरटेंसिव के लिए थायराइड डायरेटिक्स यूज करते हैं या फिर पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक्स यूज करते हैं। तो दीज आर मोस्टली यूज टू रिड्यूस द इडिमा। ये जो पर्टिकुलरली फ्यूरोसेमाइड है दैट इज यूज्ड फॉर द टू रिड्यूस द पल्मोनरी इडिमा। ओके, नाउ दीज लूप डायरेटिक्स दे हैव मेजर एडवर्स इफेक्ट नोन एज अ ओटोटॉक्सिटी। ओके, जो पर्टिकुलरली इथाक्रेनिक एसिड जो है इसको एक टॉक्सिटी है ओटोटॉक्सिक, सो इट विल डैमेज योर 7th cranial nerve एंड दैट विल लीड्स टू डीफनेस। आप बहरे हो जाओगे, इतना खतरनाक ड्रग है इथाक्रेनिक एसिड। सो इट इज नो मोर यूज्ड इन द थेरापेटिक्स। इथाक्रेनिक एसिड इज नो मोर यूज्ड इन द थेरापेटिक्स। सो इथाक्रेनिक एसिड नहीं यूज करते मोस्टली, ये फ्यूरोसेमाइड, टॉर्सेमाइड एंड ब्यूमेटेनाइड इज ये यूज करते हैं, ब्यूमेटेनाइड। नाउ उसका स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, ये सबका तो नहीं है लेकिन सार इसका है, इसका इथाक्रेनिक एसिड का। सो इट इज डिजाइन टू मिमिक द मर्क्यूरियल डायरेटिक्स। सो एक जो पुराने मतलब आउटडेटेड ड्रग्स है अभी, जो मर्क्यूरी कंपाउंड थे वो डायरेटिक होते थे, मर्क्यूरियल डायरेटिक्स, तो उसके जैसे ही डिजाइन किया था उसको टू मिमिक द मर्क्यूरियल डायरेटिक्स। देन increased activity is seen when electron withdrawing group is placed over ortho to the unsaturated ketone. Active site for sulfhydryl reactivity. Electron withdrawing group near to your this ketone group यहाँ पे, so that will, इसका इम्पोर्टेंट नहीं है उतना सार, छोड़ दो, बस इतना याद रखो कि लूप डायरेटिक्स का मेन एडवर्स इफेक्ट क्या होता है इस ड्रग का, that is nothing but the 7th cranial nerve damage and it will cause deafness. Okay, ortho and meta position are substituted with the chlorine to produce most active compound. Okay, as seen in the ethacrenic acid. Now last point from this diuretics, that is nothing but the aldosterone antagonist. Aldosterone antagonist, that is nothing but the spironolactone. Okay, spironolactone is nothing but the aldosterone antagonist. ठीक है, अब ये स्पाइरोलैक्टोन ये पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक भी है, ठीक है, ये ज्यादा पोटेशियम का भी लॉस नहीं करेगा। तो इट इज अल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट। तो अल्डोस्टेरॉन का रोल क्या है, अल्डोस्टेरॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सोडियम एंड वाटर रिटेंशन, सो इट विल कॉज इट इज द एंटागोनाइजिंग ऑफ दैट अल्डोस्टेरॉन विल रिजल्ट इन द डायूरेसिस। ठीक है, सो स्पाइरोलैक्टोन, अभी ये स्पाइरोलैक्टोन जो है वो बॉडी में कन्वर्ट होता है, it is converted into one metabolite known as carnenone, canrenone, CARNEONE. Okay, CARNEONE. Okay, तो उसको बोलते हैं कार्नेनोन। स्पाइरोलैक्टोन इज कन्वर्टेड टू कार्नेनोन। ठीक है, सो कार्नेनोन क्या होता है, कैनरेनोन। स्पाइरोलैक्टोन इज कन्वर्टेड टू कैनरेनोन। ओके, याद रखो, इसके ऊपर क्वेश्चन एक दो बार आ चुका है, व्हाट इज द एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ स्पाइरोलैक्टोन, और स्पाइरोलैक्टोन इज कन्वर्टेड टू दिस मेटाबोलाइट नोन एज अ कैनरेनोन, CARNENONE, कैनरेनोन। ठीक है, so that is the active metabolite of spironolactone. Again it is also converted into another metabolite known as a canrenoate. Okay, canrenoate means
एसिटिक एसिड डेरिवेटिव, ठीक है। सो एसिटेट, नोएट मीन्स नोएट क्यों है, एसिटेट के लिए है। कैनरे, कैनरे नोएट, कैनरे नोन, कैनरे नोन, कैनरे नोएट, ठीक है। So these two are the metabolites of spiral electron. Okay. So firstly, after metabolism, it will be converted to candrainone, candrainone. Okay. So candrainone में क्या होगा? If you see the structure of your spiral electron, यहाँ पे सल्फामेडो ग्रुप है, ओके, तो ये रिमूव हो जाएगा, डीसल्फोनेशन हो जाएगा. सो कैंड्रेनोन will be the active metabolite. After that मेटाबॉलिज्म, ये क्या होगा, यहाँ पे जो 5-member रिंग है वो रिमूव हो जाएगा. ये रिमूव होने के बाद इसका एसिटाइल डेरिवेटिव बनेगा, उसको बोलते हैं कैंड्रेओएट, ठीक है, कैंड्रेनोएट बोल सकते हो, ओके, कैंड्रेनोएट एंड कैंड्रेनोन, दीज आर द एक्टिव मेटाबोलाइट स्पाइरल इलेक्ट्रॉन, याद रखोगे, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है. नाउ